Good morning, UKG class. How are you? Say good morning, ma'am. I am fine. Thank you. Say good morning, ma'am. I am fine. Thank you. So, UKG class, this is your oral period. Alright? English and Hindi oral period. Okay? So, we will revise the all work we have done in the class. Alright? So, let's start revision. But before starting our revision, we will read weekly learning. Alright? So, let's start. So, let's start. Okay. Fruit of the week. Fruit of the week is orange. Fruit of the week is orange. 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 Fruit of the week is orange. Okay. Color of the week. Color of the week is orange. Color of the week is orange. Alright. Next is shape of the week. Shape of the week. Shape of the week is sphere. 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 Shape of the week is sphere. This is a sphere. Alright. Next is sentence of the week. Alright. Sentence of the week is today is a sunny day. Today is a sunny day. Okay. आज sunny day है. Today is a sunny day. Alright. Sentence of the week is today is a sunny day. Next is word of the week. Alright. Word of the week is sunny. 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 Word of the week is sunny. Okay. Month of the year. Month of the year is May. 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 Month of the year is May. Alright. Now, let's start our topic. Okay. So, let's start UKG class. Alright. This is your oral period. So, no need to note down. Okay. आपको note down करने की ज़रूरत नहीं है. We have already done. Okay. हमने पहले ही complete कर लिया इसे. But you have to read again and again. Alright. So, let's start. In cursive writing A to Z. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alright. Now, repeat again. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rabbit, S for swan, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yak, Z for zebra. Okay, Z for zebra. Alright. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alright. So, this is your A to Z. Alright. Now, we will revise beginning sound. Alright. The beginning sound. We have already done in the class. Alright. Beginning sound. So, let's start. Write the beginning sound. Beginning sound means first letter sound. जो first letter होगा उसका जो sound होगा that is beginning sound. Okay. So, let's start. What is this? This is a bat. Bat. B. The beginning sound, first letter sound is B. So, you have to write here B. B. Bat. B-A-T. Bat. B-A-T. Bat. Next is cap. K. So, you have to write here C. C-A-P. Cap. Okay. Next is fan. F-A-N. Fan. Next is hat.
H-A-T, hat. Next is jug. J-U-G, jug. Next is lip. L-I-P, lip. So these are beginning sound, means first letter sound. Bat, B, bat. Cap, C, okay, cap. Fan, F-A-N, fan. For, fan. Her, H-A-T, hat. Her, hat. Next is J-U-G, jug. Jaw, J-U-G, jug. Next is lip, L-I-P, lip. L, L. So L-I-P, lip. These are the beginning sounds. Alright. So do practice at your home. Okay, class? Now, already taught you a poem. Okay, English poem. So today we will revise it. Okay, हम आज इसे भी revise करेंगे. So let's start. Butterfly, butterfly, flutter around. Butterfly, butterfly, flutter around. Butterfly, butterfly, touch the ground. Butterfly, butterfly, touch the ground. Butterfly, butterfly, fly so free. Butterfly, butterfly, fly so free. Butterfly, butterfly, land on me. Butterfly, butterfly, land on me. Butterfly, butterfly, reach the sky. Butterfly, butterfly, reach the sky. Butterfly, butterfly, say goodbye. Alright? You have to read again and again and learn it. Okay? You have to learn it. आपको अच्छे से learn करना है. Alright? So, one more time. Repeat again. Alright? Butterfly, butterfly, flutter around. Butterfly, butterfly, touch the ground. Butterfly, butterfly, fly so free. Butterfly, butterfly, land on me. Butterfly, butterfly, reach the sky. Butterfly, butterfly, say goodbye. Okay? Alright. So, this is your English oral. Alright? ये आपका क्या था? English oral. Now, we will revise Hindi oral also. Okay? हमें क्या करना है? हिंदी oral भी हमें revise करना है. Okay? So, let's start. So, UKG class, this is your Hindi oral. Okay? This is your Hindi oral. Okay? Now, we have done Swar Vyanjan. Okay? In notebook, written and oral. Okay? Both. हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल रिवाइज इट. हम इसे रिवाइज करेंगे. ओके? स्वर होते हैं आपके अ से अह तक एंड व्यंजन क से ज्ञ. ओके? एंड मिश्रित ये भी व्यंजन में आते हैं श्र, ढ और ढ. ऑलराइट? सो लेट्स रिवाइज इट. अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उससे उल्लू, बड़ा उससे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली. रिपीट अगेन. अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह. ओके? ये है आपके स्वर अ से अह. नेक्स्ट व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ढ, ढ. लेट्स रिपीट अगेन. व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह,
अक्ष त्र ज्ञ श्र ढ ढ. So these are your स्वर और व्यंजन. ओके ये आपके स्वर और व्यंजन थे. रीड अगेन एंड अगेन. आपको लर्न करना है, इसे रीड करना है. ओके नेक्स्ट इज दो अक्षर के शब्द. ओके ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है नोटबुक में. यू हैव टू लर्न इट. ओके एनी 5 और 6 दो अक्षर के शब्द. ओके लेट्स स्टार्ट. अब अब, कब कब, जब जब, कल कल, हल हल, फल फल, बस बस, रथ रथ, खग खग, छत छत, घर घर, पढ़ पढ़. लेट्स रीड अगेन. अब अब, कब कब, जब जब, कल कल, हल हल, फल फल, बस बस, रथ रथ, खग खग, छत छत, घर घर, पढ़ पढ़. ओके रीड अगेन. अब कब, जब, कल, हल, फल, बस, रथ, खग, छत, घर, पढ़. ओके these are your 2-letter words. दो अक्षर के शब्द. So UKG class, these are your oral. Okay दो अक्षर के शब्द, स्वर व्यंजन. Okay you have to learn it. Okay read and learn. Now we will revise a poem. Okay मैंने आपको एक poem learn कराया था, याद है आपको? So we will revise that poem also. हम उस poem को भी revise करेंगे. Okay so let's start. लर्न विद एक्शंस. ओके एक्शंस के साथ लर्न करना है आपको. ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट पोम. बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरी बात पर मत दो कान, बुरी बात पर मत दो कान, यही सीख बाबा गांधी की, यही सीख बाबा गांधी की, बच्चों दो तुम इस पर ध्यान, बच्चों दो तुम इस पर ध्यान. रिपीट अगेन. बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरी बात पर मत दो कान, बुरी बात पर मत दो कान, यही सीख बाबा गांधी की, यही सीख बाबा गांधी की, बच्चों दो तुम इस पर ध्यान, बच्चों दो तुम इस पर ध्यान. ओके सो UKG class you have to learn two poem. So UKG class you have to learn two poems. One बापू की सीख in Hindi and second is butterfly butterfly. Okay so you have to learn it. This is your Hindi and oral revision. All right so thank you class. That's enough for today. Okay thank you so much.